हेलो एवरीवन, दिस इज़ गणेश एंड यू वाचिंग हाईवे मोटर राइडर। एंड आज है ट्यूसडे या वेडनेसडे आज। कल केन्या में इलेक्शन था एंड आज इतनी भीड़ नहीं है और हमारी ऑलमोस्ट एक वीक की छुट्टी भी है। एंड आज मैं सोच रहा था कि अपनी बाइक रिपेयर करा के आऊँ। ये इसमें से जो फ्रंट ये जो फोक है इसमें से ऑयल लीक कर रहा है काफ़ी। अभी तो मैंने साफ़ कर दिया है तो उसमें से काफ़ी लीक कर रहा था। सो इसका सील चेंज करनी है एंड थोड़ा चेकअप भी कराना है बाइक का, और ये बार एंड का ये भी लगाना है जो लास्ट टाइम गिर गया था। एंड अभी मैंने बाइक का एक साफ़ करके रखी है एंड अभी हम निकलेंगे वर्कशॉप की तरफ एंड देन वी सी। अभी मैंने बाइक वार्म अप के लिए लगाई है तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखो इसका एग्जॉस्ट ऑलमोस्ट हो गया वार्म अप। तो अभी मैं घर से निकल गया हूँ एंड आज थोड़ा मैंने माइक में थोड़ा डिफरेंट वो लगाया है एक्चुअली। इसमें मैंने लगाया डेड कैट, क्योंकि पिछले बार जब मैं बाइक चला रहा था तो विंड की जो साउंड आ रही थी उसकी वजह से आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है। तो आई होप इस बार थोड़ी आवाज़ में थोड़ा फ़र्क पड़े, विंड लॉस से आवाज़ ना आई थी। और मेरा फ्रंट ब्रेक आज काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें जो फ्रंट फोक का जो ऑयल था हाइड्रोलिक ऑयल आई थिंक वो उसका लग गया है, तो उसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा है। आई थिंक थोड़े टाइम बाद अपने आप ही ऑयल सूख जाएगा तो उसके बाद ये काम करने लग जाएगा। और रोड उतनी गाड़ियाँ नहीं दिखती मेरे को रोड पे, ऐसा लग रहा है संडे है। अभी हमने कनेक्ट कर लिया है अभी उबरू हाईवे। टाउन का व्यू बड़ा अच्छा आता है यहाँ से, राइट साइड में टाउन है। तो मैं सेल्फ फ्यूल कराऊंगा, उसके बाद फिर निकलेंगे हम अपने वर्कशॉप की तरफ, जो काफ़ी यहाँ से आई थिंक अबाउट 18 किलोमीटर दूर है। और बाकी जो वर्कशॉप हैं वो सब बंद हैं, तो मैं वहीं जाऊँगा। अभी तक मैं ज़्यादातर उधर ही करता हूँ अपनी बाइक लेके। करा रहा हूँ, उसके बाद से निकल जाती हूँ। वो 6 लीटर का फ्यूल है। काफ़ी होगा आज के लिए। शेल का पेट्रोल पंप है और उसके यहाँ फ्यूल थोड़ा अच्छा मिलता है। शेल में फ्यूल अच्छे मिलता है। अभी निकलता अपने वर्कशॉप की तरफ। तो इधर से मेरे को राइट लेना है अभी।
कनेक्ट करना है हमको। एग्जिट करा है इधर से मेरे को लेफ्ट लेना है, फर्स्ट लेफ्ट। इधर से ज़्यादा दूर नहीं है वर्कशॉप, ऑलमोस्ट आई थिंक 2 मिनट्स। So I've reached the place, ultimate bike garage. This is where I get my bikes repaired. So they deal with multi-brands. I find this place like best for repairing the bike. No hawking.
so I'm waiting for them to open. Come on. Oh. Alex Said he's open. So, okay. This and front fork seals have been replaced, and I fixed this bar end for the right hand side, and chain also serviced. It was a bit loose also, so I've done that. So this is the place, and where I was sitting, there's the owner for the place, and now I'm leaving. Even they showed me how to adjust my front fork to be how they, the absorber, how they become soft and loose. I didn't know how to adjust them because these are manual. So now I'm leaving for home. Thika highway, going back to my house. I'll pass through Auckland. और यहाँ थोड़ी गर्मी भी है, काफ़ी धूप निकली है तो थोड़ा गर्म हो रही है, बाइक भी गर्म हो रही है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको 6 गियर से जाता हूँ। 6 गियर में मुझे बहुत कम टाइम मिलता है कि that I ride bike on 6 गियर। विंड ब्लास्ट तो बहुत है ज़बरदस्त है।